Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my YouTube family. Hope you are doing well and great. So I am here for all of you to discuss chemistry and its branches. Let's start it. Basically chemistry is a branch of science, and as I already told you in my last video, science means to know, and that provide knowledge to understanding the world and how it's work. So chemistry is a branch of science in which we deals with the composition, structure, properties and reaction of matter. So chemistry. First we will write something about chemistry. Chemistry means composition, structure, properties and reaction of matter. सो इन केमिस्ट्री में हम ये देखते हैं कि हम जो रिएक्शन करवा रहे हैं उसकी कंपोजिशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं. प्रॉपर्टीज़ में आप ये आ जाता है कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, एंड रिएक्शन जो हम करवा रहे हैं वो किस चीज़ का है, मैटर क्या है वो. एंड केमिस्ट्री का मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारी डेली लाइफ में केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, जैसे कि हमारी ड्रग्स, मेडिसिन्स, हमारी कॉस्मेटिक्स में. इसके अलावा बहुत सी चीज़ों में केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा यूज़ होती है. इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ जो में एंड पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज़ में, बहुत सी इंडस्ट्रीज़ में इसका बहुत ज़्यादा मेन रोल है. So here we will discuss the different branches of chemistry. Branch number 1 is organic chemistry. Inorganic chemistry. Biochemistry. Physical chemistry. Analytical chemistry. Biochemistry, physical chemistry, analytical chemistry, nuclear chemistry, industrial chemistry, these are the main branches of chemistry. We will discuss about all of these branches in this video. Number 3, 4, 5, 7. So first branch of chemistry is organic chemistry. Organic chemistry is a branch of chemistry in which we study about the carbon, hydrogen and its derivatives. First point is study of carbon, hydrogen and their derivatives. एंड देयर डेरिवेटिव्स. इसके अलावा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो नेचुरली अकरिंग भी होते हैं, एंड इनको हम लेबॉर्ट्रीज में सिंथेसाइज भी कर सकते हैं. नेचुरली अकरिंग एंड आल्सो सिंथेसाइज्ड in laboratories. ऑर्गेनिक केमिस्ट जो होते हैं वो डिटर्मिन करते हैं द प्रॉपर्टीज़ एंड स्ट्रक्चर ऑफ नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स एज वेल एज सिंथेसाइज्ड कंपाउंड. सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज बेसिकली डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन एंड केमिकल्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. फॉर एग्जांपल a process of photosynthesis in leaf because a change in a chemical composition of plant of a living plant. इसके अलावा इसके हमने कभी सोचा है कि हम जो हेयर
कंडीशनर यूज़ कर रहे हैं या हम जो शैम्पू यूज़ कर रहे हैं वो किस तरह उसको मैन्युफैक्चर किया गया है। एंड द ड्रग्स, हम जो ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं जब हमें कोई भी डिजीज़ हो जाती है तो वो ड्रग्स जो है वो किस तरह उनको सिंथेसाइज़ किया गया है। ऑर्गेनिक केमिस्ट ही होते हैं जो इन चीज़ों को सिंथेसाइज़ करते हैं। So the scope of this branch, इस ब्रांच का जो स्कोप है वो है फार्मास्यूटिकल में, पेट्रोकेमिकल्स, एंड पेट्रोलियम्स साइड्स पे, पेट्रोलियम। इन इंडस्ट्रीज़ में इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा स्कोप है। इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी डिफरेंट ब्रांचेस हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो ब्रांचेस हैं, फॉर एग्जांपल कीटोन्स, एल्डिहाइड, उसके अलावा अल्कोहल बहुत ज़्यादा हमारी यूज़ होती है। कोका कोला तो हर घर में यूज़ होती है, हर शख्स पीता है, तो अल्कोहल उसमें भी होती है। उसके अलावा हाइड्रोकार्बन्स that are C, carbon and hydrogen and their derivatives. So this is the organic chemistry. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारी मतलब इंडस्ट्री में, हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा मेन रोल है। इसका स्कोप बहुत ज़्यादा हाई है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ में, उसके अलावा ड्रग्स, मेडिसिन में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। Okay, let's come to the second branch of chemistry, that is inorganic chemistry. Inorganic chemistry. व्हाट इज़ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री? कभी हमने सोचा है कि हमारी जो अर्थ है वो गोल्ड किस तरह फॉर्म कर रही है, किस तरह सोना बना रही है? दैट इज़ व्हाट आवर इनऑर्गेनिक केमिस्ट डू इन द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स अदर दैन द कार्बन एंड हाइड्रोजन और हाइड्रोकार्बन्स। ऐसे कंपाउंड्स और एलिमेंट्स जो कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो बाकी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। सो विदाउट कार्बन, हाइड्रोजन और डेरिवेटिव्स ऑफ, except carbon and hydrogen, all other elements and compounds are inorganic compounds. Inorganic compounds cover all the material that are not organic, termed as non-living substances that do not contain carbon and hydrogen. So the for example glass, cement, and ceramics and metallurgy. Metallurgy is the extraction of metal, from ores is called metallurgy. So glass, cement and ceramics and metallurgy are the examples of inorganic compound. And इसके अलावा crystal structure, crystallitic structure and minerals and metals is inorganic compound. The next branch of chemistry is biochemistry. What is biochemistry? Biochemistry, study of chemical processes in living organisms is called biochemistry. For example, हमारी body में जितनी भी चीज़ें, everything in our body is made up of atoms, molecules and different chemicals, compounds like carbon, oxygen and hydrogen.
and hydrogen. In biochemistry, the branch of biochemistry deals with the structure, composition, chemical reaction of substances in living organisms. Structure, composition, and chemical substances in living organism. Biochemistry covers all the chemical processes take place in living organism. For example, synthesis and metabolism. And metabolisms of biomolecules like carbohydrates, fats, and proteins, etc. For example, we can say that how living things obtained from energy how living things obtained their energy from food, and how chemical changes occur during a disease. किस तरह chemical changes occur होती हैं और हम किस तरह अपनी एनर्जी खुराक से हासिल करते हैं, किस तरह हम अपनी एनर्जी को obtain करते हैं, ये सब कुछ जो है वो हमें बायोकेमिस्ट्री में हमें obtain होता है. एंड द ब्रांचेस ऑफ बायोकेमिस्ट्री, डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं बायोकेमिस्ट्री की. फॉर एग्ज़ाम्पल एंजाइमोलॉजी. वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं एंजाइम्स के रिलेटेड. एंड एंडोक्राइनोलॉजी जिसमें हम स्टडी करते हैं हार्मोन्स के रिलेटेड. क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री जिसमें हम किसी डिजीज़ को स्टडी करते हैं. एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जिसमें हम बायोमॉलिक्यूल्स एंड उनके फंक्शंस को स्टडी करते हैं. फर्स्ट इज़ एंजाइमोलॉजी. Second one is molecular biology. And the next one is endocrinology. And the last one is clinical biochemistry. जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि एंजाइमोलॉजी में हम एंजाइम्स को स्टडी करते हैं. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम बायोमॉलिक्यूल्स और उसके फंक्शंस को स्टडी करते हैं. एंडोक्रिनोलॉजी में हम किसी हार्मोन्स को स्टडी करते हैं. क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में हम स्टडी ऑफ डिजीज़ करते हैं, किसी भी डिजीज़ की स्टडी करते हैं. सो ये था बायोकेमिस्ट्री के रिलेटेड, और मैंने उसकी ब्रांचेस ऑफ बायोकेमिस्ट्री आपको ये भी बता दिए हैं. एंड देन कम टू द एनालिटिकल केमिस्ट्री. एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होता है कि एज द नेम शो एनालिटिकल मीन किसी भी चीज़ को एनालाइज करना, उसको डिटर्मिन करना कि जो हम केमिकल यूज़ कर रहे हैं या जो हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसमें केमिकल क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसको एनालाइज करना एनालिटिकल केमिस्ट्री में आता है. सो द स्टडी दैट हाउ वी एनालाइज द केमिकल कंपाउंड ऑफ अ सैम्पल. हम केमिकल कंपाउंड का जो सैम्पल का जो केमिकल कंपाउंड है उसको किस तरह एनालाइज करते हैं. एनालाइज ऑफ अ केमिकल कंपाउंड of any sample. अब इसमें ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम टी पी रहे हैं या हम कॉफ़ी पी रहे हैं तो वी डोंट नो दैट हाउ मच क्वांटिटी ऑफ कैफ़ीन इन अ कप ऑफ टी. वी डोंट नो दैट हाउ मच क्वांटिटी ऑफ कैफ़ीन इन अ कॉफ़ी.
सो इस तरह हम किसी कप चाय के कप में कैफ़ीन कितनी है उसको एनालाइज करने के लिए जो केमिस्ट होते हैं वो फॉरेंसिक साइंस में और इन्वायरमेंटल साइंस में और ड्रग्स टेस्टिंग वाले एरियाज़ में वहाँ जाके इनकी क्वांटिटी और क्वालिटी को एनालाइज करते हैं. सो देर आर टू ब्रांचेस ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री, qualitative qualitative and quantitative. इन क्वालिटेटिव केमिस्ट्री सॉरी इन क्वालिटेटिव एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या होता है कि वी एम्प्लॉयज़ द मेथड्स एंड मेजरमेंट्स एंड विच हैव टू डिटरमिन द कंपोनेंट्स ऑफ अ सब्सटेंस कि किसी भी सब्सटेंस की क्वालिटी क्या है, किस तरह की उसकी क्वालिटी है वो सब्सटेंस, उसमें कितने केमिकल्स किस तरह के पाए जा रहे हैं उसको डिटरमिन करते हैं. एंड इन द क्वांटिटी में ये होता है कि आइडेंटिफाई करता है कि उस कंपाउंड की क्वांटिटी क्या है. ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री. And in industrial chemistry, branch of chemistry which applies chemicals and physical processes toward the transformation of raw materials and that are of benefit of humanity. So industrial chemistry deals with the manufacturing of chemical compound on commercial scale. Manufacturing of chemical compound let me take a break for prayer. सो इन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में ये होता है कि हम कमर्शियल स्केल पर बहुत बड़े मतलब स्केल पर केमिकल्स की फॉर्मेशन करते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं. अब वो केमिकल्स इंडस्ट्रीज़ में कमर्शियल स्केल पर रेडी होते हैं. सच केमिकल्स लाइक ऑक्सीजन, क्लोरीन, अमोनिया, caustic soda, nitric acid and sulfuric acid. These chemicals are prepared on very high scale in the industrial chemistry, and these chemicals provide raw material for many other industries such as fertilizers, textile, agriculture, and paints and papers industries. So, the chemicals that are synthesized on commercial scale are nitric acid, sulfuric acid, oxygen, chlorine, caustic soda. Etc. So the next is nuclear chemistry. In this branch of chemistry, it deals with the radioactivity, nuclear processes, and properties of chemical substances. In this branch of chemistry, we deal with radioactivity of substance, chemical processes, nuclear processes, and its properties. And the main concern of this branch of chemistry is atomic energy, and its uses in our daily life. For example, हम मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं, रेडियोथेरेपी करते हैं, डायग्नोस्टिक करते हैं, तो हम इसमें न्यूक्लियर केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं. इन मेडिकल ट्रीटमेंट रेडियोथेरेपी
radiotherapy, diagnostic, and prevention of food and generation of electrical power through nuclear reactor. These are the main applications of nuclear chemistry. Prevention of food and generation of electric power from nuclear reactor. These are the main applications of nuclear chemistry. So the next branch of chemistry is physical chemistry, that is also very used in our daily life, that is physical chemistry. Physical chemistry is a branch of chemistry that deals with the relationship between the composition and the properties of physical matter. अब हम इसमें किसी भी मैटर या सब्सटेंस की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं, उसकी कंपोजिशन, उसका रिलेशनशिप क्या है, कंपोजिशन का रिलेशनशिप उसकी प्रॉपर्टीज़ के साथ क्या उसका इफेक्ट होता है, उसको हम डिस्कस करते हैं. एंड अलॉन्ग विद द चेंजेस ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, formation and behavior of gases and effect of temperature. These are the applications of physical chemistry. Deals with the relationship between composition and properties of physical matter. Properties and applications इसकी जो हैं, for example structure of atom, formation of molecule, molecules and behavior of gases. मतलब gases का, liquid का and solids का क्या behavior, किस टाइप के हैं, उसका डिस्कस करती हैं. एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. So these are all the branches of chemistry that we discussed in this lecture. Hope guys this video will be informative and helpful for all of you. Keep supporting me and thank you so much.